quantization of charges. So what is this quantization? What is the meaning of this term quantization? Quantization means fixed value. Quantization means fixed value or a definite value. So quantization of charge, what it mean? We know whenever we rub two bodies, then some of the electron from one body get transferred to the other. हम जब भी दो बॉडी को लेते हैं और ये दोनों बॉडी जो है इन नेचुरल कंडीशन न्यूट्रल रहता है. सो दोनों बॉडी जो है न्यूट्रल है. न्यूट्रल मतलब इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है. ठीक है. सिमिलरली ये बॉडी में भी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज, और नेट चार्ज इस बॉडी में है, नेट चार्ज जो है 0, और इसमें भी नेट चार्ज जो है वो कितना है 0. सो दोनों बॉडी में नेट चार्ज 0, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बॉडी जो है न्यूट्रल है. अब हम जब दोनों बॉडी को रबिंग करेंगे, सो रबिंग करेंगे तो एक बॉडी से मान लेते हैं ये बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके इस बॉडी पे जा रहा है. सम इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर टू द सेकेंड बॉडी. तो इस बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके जाएगा तो ये बॉडी जो है ये हो जाएगा निगेटिवली चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, और ये बॉडी जो है उतना ही पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. ये बॉडी हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और ये हो जाएगा निगेटिवली चार्ज बॉडी. अब हम जानना चाहते हैं कि हाउ मच चार्ज द बॉडी दिस बॉडी हैव और दैट बॉडी हैव. ये दोनों बॉडी में से कोई भी एक बॉडी में कितना चार्ज है ये हम जानना चाहते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज. सो व्हेन वी वांट टू नो द अमाउंट ऑफ चार्ज और द क्वांटिटी ऑफ चार्ज द बॉडी हैव, तब हम कहेंगे कि इस बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो एक इंटीग्रल नंबर होगा. इंटीग्रल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 10, 15, 100, 1000, 1000 ऐसा. कैसा नहीं जाएगा 1.2, 1.3, 7.9, दैट मीन्स डिस्क्रीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ट्रांसफ़र. कि एक इलेक्ट्रॉन का कुछ हिस्सा यहाँ पे है और कुछ हिस्सा यहाँ पे चला गया, ऐसा नहीं हो सकता. जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफ़र, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा. अगर पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो ये बॉडी पे या फिर ये बॉडी पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे चार्ज ऑन एनी बॉडी, and that is equal to plus minus NE, where N is any positive or negative integer. इसको हम कहते हैं quantization of charge. That means charge on any body is an integral multiple of charge of an electron or the basic unit of charge. That this N is either positive or negative integer. That means whole number. So this n is positive or negative integer, that means n can have values, like 1, 2, 3, 9, 10 या 100 या 1000 या 1009 या more than that. But n cannot have values. N cannot have values 1.2, 1.7, 9.6, 4.3. This type of discrete values n cannot have. That means discrete number of electron cannot transfer from one body to other. So which we call that this property, this fixed value, we called it as quantized or quantization.
So what is this quantization of charge? Now see, what is this quantization of charge? Quantization of charge means the charge, or it is the basic property of charge by virtue of which the charge on any body will remain the integral multiple of charge of an electron. That means quantization of charge, we will write the notes of that the basic property or the property of a body by virtue of which the charge of any body is an integral multiple of basic unit of charge. Basic unit of charge, that is charge of an electron. Charge of an electron. So that we write it as charge on any body q, and that charge q is equal to plus minus या फिर q is equal to ne, where n is any positive or negative integer. So this basic property of any body we called it as quantization of charge. So quantization of charge means the charge on any body is an integral multiple of charge of electron. That means charge, whenever we charge a body, that means electron transfer from one body to the another, and in doing so the integral number of electron can transfer, and as a result the body will have charge of integral number of charge of electron, isn't it? So this is basically your quantization of charge. Now we will go for a numerical on that. And quantization of charge is experimentally demonstrated by Millikan in 1912, and that quantization of charge was first experimentally demonstrated or explained by Millikan in 1912 in his oil drop experiment. Now we will move to a question, that is it possible to have a body of charge 5.8 into 10 to the minus 18 coulomb. So here the question is whether we are to find that whether it is possible to have a body whose charge is 5.8 into 10 to the power minus 18 coulomb. क्या कोई बॉडी का चार्ज 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम हो सकता है? तो इसको देखने के लिए, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि वी नो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE. हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि Q इक्वल टू NE. अगर NE हो रहा है तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे Q का वैल्यू दिया हुआ है. This is the value of Q that is given to us, and E is the charge of electron which we know that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So we are to find N, and N is equal to Q divided by E, and implies N is equal to Q, that means 5.8 into 10 to the power minus 18 coulomb divided by E. The value of E, that means charge of electron, is constant, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and that is equal to this coulomb cancel out, and this 5.8 into, see, 10 to the power minus 8 and 10 to the power minus 19. 10 to the power minus 19 means 10 to the power minus 18 into 10 to the power minus 1.
this minus 18 minus 15 will cancel out, so 10 to the minus 1 will remain in the lower half. So that way, if we bring it over here, then it will be 10. This is divided by 1.6, and that is equal to 58. 5.8 into 10, that is 58, divided by 1.6, and that is equal to 580 divided by 16, and that is equal to 36.25, isn't it? So here we are getting n equal to 36.25, which is a discrete value, and n cannot have a discrete value because n is an integer. So we are not getting an integer over here, and thus the body having this charge is not possible. So we will conclude that thus here n is not an integer. N is not an integer, so it is not possible to have a body of charge this much, isn't it? Thank you.